Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. You're welcome in your computer class. Students, today we are going to start our 10th chapter operating a computer. Our 10th chapter is operating a computer means how we can operate a computer. हम कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, how we can operate, how हम कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं. ओके, now let's start reading first, then I will explain. A computer is an electronic machine. It needs power to function. You must know to switch on and switch off the computer properly. Follow these simple steps to start the computer. Switch on the main power supply button on the switchboard. Switch on the UPS. A computer is usually attached to a UPS. The UPS provides sufficient sufficient battery power to run your computer for some time in case of a power failure. Failure. Switch on the CPU by pressing the power button of the CPU. Switch on the monitor by pressing the power switch button of the monitor. Wait for the machine to completely completely load the operating system. Now students, in this chapter we learn how we can switch on or switch off our computer system. Computer is an electronic machine, you know. We all knows a computer is an electronic machine. It run by the electricity. It needs power to function. Now you must know to switch on and switch off the computer properly. How we can switch on or switch off the computer, now we learn. So we have to follow these simple steps. Switch on the main power supply button on the switchboard. स्विचबोर्ड से जो हमारा मेन पावर सप्लाई बटन है, फर्स्ट हमें उसे ऑन करना है, प्रेस करना है. ओके, वी हैव टू ऑन द मेन पावर सप्लाई. देन स्विच ऑन द UPS. If you have UPS in your computer system, you have to switch on. UPS is like that, you can see, and this is the button. You have to press this button. After that your switch UPS is switch on. Okay, a computer is usually attached to a UPS. The UPS provides sufficient battery power to run your computer for some time in case of power failure. मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उस टाइम पर आपका कंप्यूटर, जैसे इन घर में इन्वर्टर होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर्स में यूपीएस होता है कि जब लाइट चली जाती है उसके बाद भी हम कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं. उस टाइम पे कौन पावर सप्लाई करता है? दिस यूपीएस. दिस इज कॉल्ड यूपीएस. सो आवर यूपीएस इज अटैच्ड विद द computer. So UPS provides sufficient electricity to the computer system after the power failure. Now switch on the CPU by pressing the power button of the CPU. You can see CPU like that. You have to press the power button. You can see this is power button. You have to press the power button
to switch on the CPU box. First main switch button, then UPS, then CPU. Okay. After that, switch on the monitor by pressing the power switch button. You can see here power switch button of the monitor, and after that wait for the machine to completely load the operating system. After that you have to wait for some time. Your machine is completely load the operating system. Now next, Microsoft Windows is a series of software operating system. What is Microsoft Windows? It is a series of software operating system. Series of software operating system. Among these, Windows XP and Windows Vista are popular version. Their desktop screen are given below. बेटा जो हमारा विंडो स्क्रीन हम देखते हैं कंप्यूटर पे, हम जो स्क्रीन देखते हैं वो क्या होती है? विंडो, ठीक है। और हमारे जो दो पॉपुलर विंडो हैं वो है एक विंडो एक्सपी और दूसरी है विंडो वीस्ता। किसी के सिस्टम में विंडो एक्सपी होती है, किसी के में वीस्ता होती है। सबके सिस्टम्स में अलग अलग विंडो होती है। ये तो है विंडो एक्सपी की स्क्रीन और ये है विंडो वीस्ता की। अगर किसी के वीस्ता होगा तो ये वाला स्क्रीन नजर आएगी आपको, अगर एक्सपी होगा तो ये वाली। An operating system is a software program that manage everything on your computer system. Operating system क्या है? जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सारी चीजें मैनेज करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। And if a person is able to drive a car, he can drive any model of a car like Maruti, Astra, Hyundai i20, Tata Indica, etc. Similarly, if one is able to operate Windows Vista operating system, she can also operate any other operating system. My meaning is that if a person knows how to drive a car, यदि किसी व्यक्ति को आता है कि कार कैसे चलाते हैं तो वो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, हुंडई की हो, टाटा की हो या मारुति की हो, वो सबको चला लेगा। वैसे ही अगर किसी बंदे को कंप्यूटर चलाना आता है, उसने किसी एक विंडो पे काम किया है तो वो सारी विंडोज़ पे काम कर सकता है, चाहे वो फिर विंडो वीस्ता हो, एक्सपी हो, विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, ठीक है। वो सभी विंडोज़ पे इजीली वर्क कर सकता है, बट आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यू नो नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट अ कंप्यूटर, मीन्स हाउ वी कैन स्विच ऑन अ कंप्यूटर। फर्स्ट main power button, then UPS, then CPU and then monitor. Okay, after that our window is opened. It can be like that or it can be like that, the window in your computer according to that. So student, today this much is enough. Page number 40 and 41 you have to read. If you have computer system at your home, then practice. In next class we will learn how to switch off a computer. Okay student, bye bye, take care.